हेलो स्टूडेंट्स, हमारा नया टॉपिक है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी मतलब इलेक्ट्रॉन्स जब किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी फोर्स के अंडर में मूव करते हैं उसको उनकी ड्रिफ्टिंग कहते हैं। बेसिकली इलेक्ट्रॉन्स में दो तरह की वेलोसिटी होती है। पहली वेलोसिटी होती है उनकी थर्मल स्पीड या थर्मल वेलोसिटी। दिस इज एज फास्ट एज ऑफ द ऑर्डर ऑफ स्पीड ऑफ लाइट, यानी स्पीड ऑफ लाइट के आसपास चलते हैं इलेक्ट्रॉन्स। यही रीजन है कि जैसे ही हम स्विच ऑन करते हैं बल्ब तुरंत से जल जाता है, क्योंकि ये इलेक्ट्रिक फील्ड ट्रांसमिट होता है एट द स्पीड ऑफ थर्मल स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। दूसरी स्पीड होती है उनकी ड्रिफ्ट स्पीड या ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ये कौन सी वेलोसिटी होती है, लेट अस सी। जब इलेक्ट्रॉन किसी कंडक्टर के अंदर होते हैं तो दो तरह के इलेक्ट्रॉन्स हमें पता है। पहले इलेक्ट्रॉन होते हैं बाउंड इलेक्ट्रॉन, जो मटेरियल के लैटिस में होते हैं, एंगेज्ड होते हैं बॉन्ड मेकिंग में। दूसरे होते हैं बॉन्ड फ्री यानी फ्री इलेक्ट्रॉन्स। यही इलेक्ट्रॉन चार्ज को लाने ले जाने का काम करते हैं, यानी कंडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो किसी भी मटेरियल में जो चार्ज का कंडक्शन होता है, करंट का कंडक्शन होता है, वो होता है इन टर्म्स ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। फ्री इलेक्ट्रॉन्स अगर थर्मल स्पीड पे चले तो क्या होगा, और अगर हम कंडक्टर के अंदर सिचुएशन देखें, कंडक्टर्स वो मटेरियल है जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज्यादा होते हैं, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज्यादा होते हैं। इन कॉपर द वैल्यू ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम इज अराउंड 10 raised to the power 28. You can assume 10 raised to the power 28, such a big value. तो पर यूनिट वॉल्यूम, दिस इज कॉल्ड फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, यानी नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एन से डिनोट करते हैं। अब ये इलेक्ट्रॉन जब इतनी लार्ज नंबर में किसी मटेरियल के अंदर, किसी कंडक्टर के अंदर मूव करते हैं तो नेचुरल सी बात है इनमें कहीं ना कहीं कोलिजन होता है। दिस कोलिजन मेक देम डिस्ट्रैक्ट फ्रॉम देयर पाथ। उनका जो एक्सेलरेशन उन्होंने गेन किया था अंडर द इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, वो ब्रेक हो जाता है, और इस ब्रेकिंग की वजह से इलेक्ट्रॉन की स्पीड घट जाती है। तो दिस लार्ज नंबर ऑफ फ्रीक्वेंट कोलिजन्स अमंग द इलेक्ट्रॉन्स एंड विद द होल्स make their velocity down to very small value, and it is of the order of 0.1 mm per second। 1 mm per second से भी 10 गुना कम, 0.1 mm per second, और in terms of SI 10 raised to the power minus 4 meter per second। So what is the definition of drift velocity? This is very important, and every alternate years this value or this definition is being asked in CBSE last few years। Drift velocity is the average velocity acquired by the free electron under the effect of applied electric field. This is very small, and it is as small as 10 raised to the power minus 4 meter per second। So this is the drift velocity। तो इलेक्ट्रॉन में दो तरह की वेलोसिटी होती है। एक होती है उसकी फ्री वेलोसिटी, जिसको हम कहते हैं उसकी थर्मल स्पीड, जो बहुत ज्यादा होती है, यानी कंपेरेबल टू स्पीड ऑफ लाइट। और दूसरी होती है उसकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी, जो रिस्पॉन्सिबल होती है कंडक्शन इन द मटेरियल, एंड दिस वेलोसिटी इज क्वाइट स्मॉल एज 10 raised to the power minus 4 meter per second। So how to derive the expression for drift velocity? Let us see। We have assumed a conductor of length L and area of cross section A. This material has free electron density small n. This material or this conductor is connected to a battery of V volt, and this battery of V volt produces an electric field E across the ends of conductor। Since electric field is applied, so electron start moving towards the positive end, and this electron movement is called drift speed when taken per unit time। So let us understand, let a conductor of length L, I have already discussed, initially when there was no electric field, all the electrons were moving at the speed of light or comparable to speed of light, यानी थर्मल स्पीड पर वो मूव कर रहे थे, बट देयर नेट मूवमेंट इन एनी डायरेक्शन वाज निल। यानी इलेक्ट्रॉन मूव तो कर रहे थे, वो कभी भी रेस्ट में नहीं रहते, वो कीप ऑन मूविंग रेगुलरली, बट देयर नेट मूवमेंट इन एनी डायरेक्शन इज जीरो। हेंस इनिशियल वेलोसिटी in absence of electric field can be taken as u equals to 0। this we will put equation number 1। when electric field E is applied, then electron will experience a force, and we know force equal to होता है charge into electric field, but charge on electron is negative E। that's why we will write F equal to minus E। E minus E is the negative charge of electron, and E is the value of applied electric field।
We know F equals to ma, force into mass into force equals to mass into acceleration. So F can be replaced by ma. So acceleration in the electrons is A equals to minus E by m. This acceleration lasts for a small time unless the two electron collide. तो ये एक्सेलरेशन जो भी अभी इलेक्ट्रॉन ने अंडर द इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड गेन किया था, ये बहुत लंबे टाइम तक टिकता नहीं है. ये तब तक टिकता है जब तक वो किसी दूसरे इलेक्ट्रॉन से या दूसरे होल से टकरा नहीं जाता. इस टक्कर के बीच में जितनी डिस्टेंस ये इलेक्ट्रॉन कवर करता है, दैट वी कॉल फ्री पाथ. क्या कहते हैं इसको? फ्री पाथ. एंड वट एवर टाइम इट हैज टेकन बिटवीन द टू सक्सेसिव कोलिजन इज कॉल्ड रिलैक्सेशन टाइम. Relaxation time. Once again, I am emphasizing on this relaxation time. Class 11th में आपने ये kinetic theory of gases में पढ़ा था. Relaxation time यानी the distance between two electrons या two successive collision is called free path, and the time taken to cover free path is called relaxation time. So here I am not studying a single electron. I am studying the whole set of electrons, all the electrons in the material. Hence, I will say that this acceleration A rests for a time tau. This tau is called relaxation time. यानी कोई भी इलेक्ट्रॉन सिर्फ और सिर्फ कितने टाइम तक एक्सेलरेट होता है? टो टाइम तक. टो इज कॉल्ड मीन रिलैक्सेशन टाइम फॉर ऑल द इलेक्ट्रॉन्स. इट इज द मीन एक्सेलरेशन टाइम. और फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन वी नो V equals to U plus AT. But here we are not going to study. Now we are going to find the average speed acquired by the electron, average velocity acquired by the electron. So we will write Vd and it is U. Acceleration we have already studied, but here T is not T, it is tau, relaxation time. So putting all the values, Vd drift velocity can be written as 0 minus E tau by m. So Vd is drift speed minus E tau by m. This is the expression of drift speed or drift velocity. What indication negative sign gives us? Negative sign indicates that electron moves or drifts in the opposite direction of applied electric field. जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड लगा होता है उसके अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन मूव करता है. सो दिस इज द ड्रिफ्ट वेलोसिटी और ड्रिफ्ट स्पीड. नाउ वी आर कमिंग अक्रॉस ए वेरी इंपॉर्टेंट and very handy topic, relation between drift velocity and the current, electric current. Drift velocity और electric current में क्या relation है? This is a very important topic. I will write it 2-star topic because 2 नंबर का एक पक्का टॉपिक आता है आपके लिए. Relation between Vd and I. Vd is drift speed or drift velocity and I is electric current. Why I am calling drift speed? Because I am dealing with the scalar terms here. Electric current is scalar, so I will take the scalar version of drift velocity, that is drift speed. So often I will call it drift speed, sometimes I may call it drift velocity. Here both the terms are same. It indicates the direction and other indicates no direction. Again the same, I have assumed that a conductor of length L, area A and free electron density L, free electron density N is connecting across a battery of V volt. Because of this battery, current I flows in the circuit and electric field E acts across the terminals of the conductor. So, charge on one electron
equal to minus E. Volume of the conductor we know area into length yani A into L. Very simple. Free electron density equals to N. Number of free electrons per unit volume. If N be total number of free electrons, then N equals to N into An, because small n was total number of free electrons per unit volume. So total number of electrons in the conductor present will be free electron density multiplied by volume of the conductor. But this is the total number. But one electron contains negative E charge. So total charge in conductor present in conductor Q equals to N into E with a negative sign, or I will say Q equals to minus NaLe. Equation number 2 I am writing. This is equation 1. If I say I be the current in the conductor, then current is what? Charge per unit time. If I be current in conductor, then I equals to Q upon T. We have already studied. But what is Q? Q is NaLe divided by T. We know time. What is time? Time is the distance per unit velocity, because we know velocity is distance per unit time. So time becomes distance per unit velocity. So time, but T equals to what? Total length covered by the free electron at the speed of Vd. जिस स्पीड पर फ्री इलेक्ट्रॉन अपने पाथ को कवर करता है, टोटल पाथ यानी एल लेंथ, यहां से एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल तक एल लेंथ इसको कवर करना है, और इसमें इसको ड्रिफ्ट स्पीड मिलता है वीडी, तो जितना भी टाइम टी लेता है वो हमने यहां पर निकाला. सो आई कम्स इक्वल टू एन ए एल ई विद अ नेगेटिव साइन हियर, बिकॉज वी हैव ऑलरेडी नो इट इज माइनस एन ए एल ई एंड डिवाइडेड बाय L upon Vd, and this Vd will be written upside. L will be cancel L, or I equals to minus N E A P D. This is what the relation between current and drift velocity. Again, negative sign indicates that current flows in the direction opposite to the drift of electrons. So negative sign indicates opposite direction of current and drift velocity. So this was the relation between current and drift velocity. Here it is the very important topic. I once again sum up. Current equals to negative of free electron density, charge on electron, area of conductor, and its drift velocity. So this is all about today's topic. We will come across the next topic, Ohm's law, in specific form. Thank you for watching.